Assalamualaikum. My name is Aisham and I'm a clinical psychologist. I'm here today to talk to you about anxiety in children and how you can deal with it. Before I jump into the topic, I can tell you a little bit about myself. I am a licensed and qualified clinical psychologist. I practice in Pakistan. I have worked with children previously. I've worked with autistic and intellectual deficit children. I've also worked with mainstream children. मेनस्ट्रीम चिल्ड्रन से हमारा ये मतलब है कि चिल्ड्रन जिनको नेसेसरली कोई साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस ना हो, लेकिन हमारे पास वो आते हैं एंग्जाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन जैसे इश्यूज लाके. सो आई डू हैव अ फेयर बिट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस. My goal today is to tell you a little bit about anxiety, about what it can look like, and about how to deal with it, how to deal with it in your children, and how to and when to get help. So I'll start by jumping in and talking to you a little bit about what anxiety itself is. Anxiety एक ऐसी feeling है जिसमें बंदे क्या दिल घबराने लगता है, टेंशन की फीलिंग्स आती हैं, घबराहट शुरू हो जाती है, यू गेट वाइड थॉट्स एंड देयर आर इवन फिजिकल चेंजेस. हाथ कांपते हैं, पैर कांपते हैं, यू स्टार्ट स्वेटिंग, यू माइट स्टार्ट शिवरिंग. नाउ एज विद मोस्ट साइकोलॉजिकल कंडीशंस, एंग्जाइटी के एक स्पेक्ट्रम पे एग्जिस्ट करती है और माइनर एंग्जाइटी से लेकर जनरलाइज्ड एंग्जाइटी तक बहुत सारे टाइप्स होते हैं. एक बात मैं ज़रूर इधर मेंशन करूँगी, एंग्जाइटी लाइक फियर, लाइक सैडनेस, लाइक हैप्पीनेस एक बहुत नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है. Everybody experiences anxiety. We need to know when it's a problem and when it is just a normal reaction. For example, अगर एग्जाम से पहले आपके पास आपका बच्चा आके कह रहा है कि मुझे कल एग्जाम की बहुत टेंशन है, तो मोस्ट लाइकली आपके बच्चे को एंक्शियस इश्यूज या एंक्शियस डिसऑर्डर नहीं है. उनको लॉजिकल डर लग रहा है for something that they feel prepared for or don't feel prepared for. But before we start talking about that, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ that I have an anxious type personality, जिसका मतलब ये है that I don't necessarily have a diagnosis of anxiety, but I myself have been known to be very anxious. मैं छोटी छोटी बातों पे घबरा जाती हूँ and I've spent a lifetime learning how to deal with it. I've had patients who have anxious disorders, जिसका मतलब है कि मैंने उनको डायग्नोज किया हुआ है एंग्जाइटी के साथ या किसी टीम के साथ उनका डायग्नोसिस रीच किया और उनको ट्रीटमेंट भी दिया. ट्रीटमेंट कैन लुक लाइक मैनी डिफरेंट थिंग्स, बट लेट्स टॉक अबाउट हाउ एंग्जाइटी shows itself in children and what it can look like in children. बच्चों में anxiety थोड़ी सी मुख्तलिफ लगती है. बच्चे are learning about the world, and so communicating and talking about मुझे डर लग रहा है या मुझे टेंशन हो रही है या मेरा दिल घबरा रहा है is a little difficult. And anxiety in children can look like गुस्सा, can look like rudeness, can look like temper tantrums, it can look like many things. शायद चीज़ें तोड़ना शुरू कर दें, शायद स्कूल से पहले या रात को पेट में दर्द शुरू हो जाए, सर में दर्द शुरू हो जाए. मोस्ट लाइकली आपका बच्चा ड्रामा नहीं कर रहा. अगर ये हरकतें वो कर रहे हैं तो इट इज़ लाइकली दैट दे आर फीलिंग एंग्शियस अबाउट समथिंग. थोड़ी सी अब हम बात कर लेते हैं अबाउट व्हाट टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी एग्जिस्ट एंड हाउ वी डिफरेंशिएट देम. मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक टर्म यूज़ की, एंग्शियस टाइप पर्सनालिटी. पर्सनालिटी की हमारी कुछ टाइप्स होती हैं. कुछ लोग बहुत आउटगोइंग होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा से इंट्रोवर्टेड होते हैं, कुछ लोग एंग्शियस होते हैं और कुछ लोग नहीं होते, एट्सेट्रा. अगर आपकी पर्सनालिटी टाइप एंग्शियस है तो इसका सिर्फ ये मतलब है कि नेसेसरली आपको एंग्जाइटी का डायग्नोसिस नहीं मिला हुआ, लेकिन शायद आपका दिल जल्दी घबरा जाता है. जब हम एंग्जाइटी इटसेल्फ की बात करते हैं तो एंग्जाइटी इटसेल्फ इज अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. हैविंग एन एंग्शियस डिसऑर्डर और एन एंग्जाइटी डिसऑर्डर इज अ डायग्नोसिस एंड हेल्प इज पॉसिबल. इधर मैं थोड़ी सी आपको टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी के बारे में बता देती हूँ. हमारी एक जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर होती है, विच इज़ व्हाट आई हैव बीन रेफरिंग टू इतनी देर से, कि बेवजह खौफ लगना या बेवजह डर लगना या दिल में घबराहट रहना कॉन्स्टेंटली वुड बी जनरलाइज्ड एंग्जाइटी या परसिस्टेंट एंग्जाइटी. कुछ हमारे स्पेसिफिक फोबियाज होते हैं, जैसे प्लेन से डर लगना या कीड़ों से डर लगना या ऐसी किसी चीज़ से, वो फोबियाज होते हैं, वो स्पेसिफिक डर होते हैं. फिर हमारे पैनिक डिसऑर्डर होते हैं, विच इज़ जस्ट you're very likely to get very anxious and very scared in certain situations. उसमें पैनिक अटैक्स भी आ सकते हैं, जिसका मतलब है सांस चढ़ रही है, दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, हाथ पैर कांप रहे हैं, लग रहा है कि जैसे अभी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, लगेंगे कि अभी बस रो पड़ी हूँ मैं. And then another type that we have is social phobia या social anxiety. सोशल एंग्जाइटी का कॉन्सेप्ट ये है कि जब मैं किसी स्पेस में हूँ या जब मेरे इर्द गिर्द लोग हैं तो मुझे डर लग रहा हो या मुझे खौफ आ रहा हो एट बीइंग इन अ स्पेस विद पीपल आई एम अनकम्फर्टेबल विद. इसमें हमारी एक सब टाइप आती है जिसको हम स्टेज फोबिया भी कहते हैं या स्टेज फ्राइट कहते हैं, कि अगर मैं किसी स्टेज पे हूँ या कैमरा के सामने बात कर रही हूँ या किसी गैदरिंग में लीडर फॉर्म के तौर पे बात कर रही हूँ तो मुझे डर लगेगा. और फिर एक उसकी ये टाइप भी है कि मैं सिर्फ लोगों के इर्द गिर्द होकर मुझे खौफ चढ़ना शुरू हो जाता है, मुझे डर लगना शुरू हो जाता है, मुझे लगता है कि मैं ये कर नहीं पाऊंगी या मुझसे ये हो नहीं पाएगा.
What I'm trying to explain here is that there are multiple types of anxiety, multiple types of phobia, and understanding them is important. एक और मैं इधर मेंशन करूंगी जो छोटे बच्चों में बहुत कॉमन होता है, सेपरेशन एंजाइटी। और ये आप अपने टॉडलर्स और इन्फेंट्स में भी देखोगे कि माँ नज़र या प्राइमरी केयर गिवर नज़र नहीं आएंगे तो रोने लग जाएंगे, घबराहट से शुरू हो जाएगी, सो नहीं सकेंगे, खा नहीं सकेंगे, दिल नहीं लगेगा। बच्चों में सेपरेशन एंजाइटी होना इज़ वेरी वेरी नॉर्मल, एंड हाउ वी टैकल इट is by teaching kids कि थोड़ी थोड़ी देर के लिए अगर मामा या बाबा या प्राइमरी केयर गिवर चले भी जाएंगे तो they will always come back. I'm hoping that this is making sense. फिर what we can talk about next is the causes of anxiety. Causes हमारे लिए professionally and clinically speaking genetic होते हैं, chemical होते हैं या environmental होते हैं. Genetic से मेरा मुराद है मेरे बाप, दादा, परदादा या माँ, नानी, परनानी में से किसी एक को था, उनसे मैंने inherit कर ली। फिर मैंने बात की पर्सनल या केमिकल की। हमारी बॉडी में केमिकल्स होते हैं, हमारे ब्रेन में भी केमिकल्स होते हैं, एंड आवर बॉडी एंड आवर ब्रेन आर रूल्ड बाय दीज केमिकल्स। जब उन केमिकल्स में इम्बैलेंस आता है तो एंजाइटी, डिप्रेशन या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे मसले बहुत नॉर्मल और बहुत कॉमन होते हैं। इस टाइम पे हम यूजुअली मेडिकेशन यूज़ करते हैं, विच इज़ वाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to go to a professional when you are unable to manage a condition yourself. इसके बारे में हम थोड़ी देर में और बात करेंगे। फिर मैंने environmental की बात की। environmental में अब मेरे इर्द गिर्द वाली सारी चीज़ें आ गई। मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स डिटर्मिन करते हैं कि मुझे कितनी एंजाइटी फील होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पैदाइशी एक एंजाइटी का मसला है और फिर मेरी मदर या मेरे फादर या मेरे घर में जो लोग हैं वो मुझे कहते हैं कि तुम्हारा तो ग्रेड लाना बहुत ज़रूरी है, तुम तो ग्रेड नहीं लाओगे तो तुम्हारा तो क्या बनेगा, हाय हम क्या करेंगे, मुझ में वो एंजाइटी और प्रमोट हो रही है। और अगर फॉर एग्जांपल उसी बच्चे में वही एंजाइटी वाले ट्रिगर्स हैं या वही एंजाइटी वाले फैक्टर्स हैं और उनकी फैमिली उनको कहती है सांस लो, खैर है, विल फिगर इट आउट, आप हेल्प कर रहे हो विद हैंडलिंग द एंजाइटी। यूजुअली हम देखते हैं कि ऑल थ्री ऑफ दीज फैक्टर्स, केमिकल, जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल, एग्जिस्ट टुगेदर। 1 या 2 से भी एंजाइटी कॉज हो सकती है, किसी एक बंदे की गलती नहीं होती। इट इज़ नेवर 100% द मदर्स और द फादर्स और द नॉनीज और द नानाज और व्हाटएवर्स फॉल्ट, बट ऑल ऑफ अस हैव अ हैंड टू प्ले इन हाउ द डिसऑर्डर लुक्स, इफ दैट्स मेकिंग सेंस। फिर हमने बात, we've talked a little bit about the sort of causes. Now we can talk about the symptoms as well. Symptoms, we've been talking about them, emotional होते हैं, behavioral होते हैं और physical होते हैं। इसका मतलब है कि emotions होंगे, डर, खौफ, sadness, fear, anger. Physical, हाथ पैर कांपना, something similar. और बच्चों में violence. Violence is a very normal side effect or a very normal symptom of एंजाइटी। जब आपका बच्चा एंक्शस होता है तो शायद वो चीखने मारने लगता है, शायद वो चीज़ें तोड़ने लगता है या शायद वो रोने लगता है। बच्चे डू नॉट हैव द सेम एक्सप्रेशन अवेलेबल, so they tend to express symptoms in a very limited range. It's important to understand कि ये गुस्सा है या ये एंजाइटी है जिसको मेरा बच्चा एक्सप्लेन कर नहीं सक रहा। अब हम इधर ये भी बात करते हैं द फीलिंग वर्सेस द इलनेस। शुरू में ही मैंने कहा अगर आपका बच्चा एग्जाम से पहले घबरा रहा है बहुत नॉर्मल है, अगर आपका बच्चा बैठे बैठे एंक्शियस हो रहा है तो शायद ये इलनेस है, एंड मे बी यू शुड बी गेटिंग हेल्प और फिगरिंग आउट व्हाट यू कैन डू टू डील विद इट। थोड़े से लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द एक्सरसाइजेज वी डू एज वेल। अगर आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा एंक्शियस हो रहा है तो डोंट पुश देम टू कीप गोइंग एंड टू कीप ट्राइंग और टेल देम क्या बस करो, कुछ कोई इतनी बड़ी डील नहीं है, यू डोंट नीड टू मेक सच अ बिग डील ऑफ इट। इफ यू आर सीइंग दैट योर चाइल्ड इज एंक्शियस, take a minute, sit them down and go through deep breathing with them. हम deep breathing को rule of 3s या rule of 5 से determine करते हैं। Deep breath in for 5 seconds, hold for 5 seconds, release for 5 seconds. Generally हम 5 या 3 इस वजह से करते हैं because they're easy to count to, और दिमाग जितना भी off हो 5 या 3 तक गिनती हो ही जाती है। Run through a few cycles of deep breathing. A good way to go about it is a body scan. Where in your body do you feel the anxiety? हाथ कांप रहे हैं, पैर कांप रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है? ओके, हाउ कैन वी डील विद दैट? मेरे अगर हाथ कांप रहे हैं ना इस वक्त तो आई विल फोकस ऑन माई हैंड्स एंड आई विल फिजिकली पुट देम डाउन. I will make them still and I will focus on the feeling of making them still. Take a minute to address the physical symptoms and they can that your child will start to calm down. There's something that you can do with kids of all ages and I truly mean that. Idhar aane se pehle I did the same thing with my 1-year-old nephew because he was anxious about something and he wasn't able to control it. So we did a few cycles of deep breathing and we did a body scan exercise ताकि present में हम वापस आएं. Anxiety का अभी मैं थोड़ा सा psychological होने वाली हूँ. Anxiety is a future-based
प्रॉब्लम। एंग्जाइटी में आप हमेशा फ्यूचर के बारे में सोच के आपको डर लग रहा होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कम बैक टू द प्रेजेंट। इस मोमेंट में मैं इस टेबल पे बैठ के आई कैन फील द वुड अंडर माई हैंड्स, आई कैन हेयर माई वॉइस, आई कैन हेयर द साउंड्स ऑफ द ऑफिस रनिंग आउटसाइड, आई कैन स्मेल द एयर फ्रेशनर दैट्स नेक्स्ट टू मी, आई एम इन द प्रेजेंट। I do this with children as well. इसके बारे में हम in a little bit we'll talk about this when we talk about how to actually manage symptoms. एक ज़रूरी बात, वही बात, अंडरस्टैंड द फीलिंग। फीलिंग चली जाती है। अगर एग्जाम की टेंशन है, अगर पार्टी की टेंशन है, अगर कोई ऐसी चीज़ है तो यू कैन एड्रेस दिस। अच्छा, डर लग रहा है कि हम एग्जाम के लिए तैयार नहीं हैं, कितनी पढ़ाई की है, बाकी क्या लगता है मिसिंग है, हाउ कैन वी फिक्स दिस। अभी जितना टाइम है उसमें हम और पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, साइड पे रख दो। अच्छा, कल शादी पे जाने और कपड़े खराब हो गए, एंग्जाइटी will not help us right now. How can we solve a problem? अगर एक किसी स्पेसिफिक चीज को लेके आपका बच्चा एंग्शियस हो रहा है, solve that specific चीज। अगर बार बार एंग्जाइटी आ रही है तो solve the anxiety. अब एंग्जाइटी लाइक आई सेड इज अ ह्यूमन इमोशन, बच्चों में भी आती है और हम में भी आती है। एंड एज पेरेंट्स, एज केयर गिवर्स, बहुत नॉर्मल है कि बच्चे को घबरा के देख के वरना खुद थोड़े से हब्बड़ दब्बड़ में आ जाता है, थोड़ी सी घबराहट में आ जाता है। That is the moment when you can calm yourself down. Take a few deep breaths and then work on your child. वही जो ऑक्सीजन मास्क एनालॉजी नहीं है एयरप्लेन्स में कि अपने आप पे मास्क पहना के फिर tend to the person who needs the mask. Same thing here. Make sure your symptoms are managed enough that you can function. Then deal with your child. Try to stay as calm as possible. लेकिन nobody is perfect. You're human, and it is completely understandable that that you need to take a minute before being able to help your child. ट्राई किए हमेशा ना हो कि जब आपका बच्चा घबरा रहा है तब आप भी घबरा जाओ, लेकिन अगर हो रहा है तो इट्स परफेक्टली ऑल राइट टू टेक अ मिनट एंड एड्रेस इट फर्स्ट। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं about the 5 senses grounding activity or the rule of threes I was talking about. In situations जहाँ लग रहा है कि हाँ anxiety आ रही है या tension हो रही है, one thing that works very well is 5 senses. There's something we can do with kids as well, and you can do this as well. What are 5 things I see? What are 4 things I hear? What are 3 things I can touch? What are 2 things I smell? What is 1 thing I can taste? अगर मैं अभी ये activity करूँ तो I can see the camera, I can see the table, I can see my hands, I can see the walls, and I can see the window behind me. For example, 4 things I can hear: my voice, the sound of somebody else's voice outside, bahar jo traffic chal rahi hai, and I can find something else, like for example, I'm hearing a distant machine in the background. Ye meri 4 ye wali cheezein ho gayi. 3 things I can touch: I can touch the table, I can touch my chair, I can touch the very slippery kapda I'm wearing, right? 2 things I can smell the air freshener, I can smell my perfume. 1 thing I can taste is the coffee I had in the morning, and that's the last thing that I had before I came here. This way, when I'm doing this, जब मेरा दिमाग is running at 1,000,000 kilometers an hour, मैंने ये हरकत की है ना, मैंने अपने दिमाग को slow down किया और कहा है अभी क्या हो रहा है, अभी इस वक्त क्या हो रहा है. Another thing that works with kids, अगर उनसे उस वक्त नहीं focus हो रहा, you can go on the rule of threes. अपने इर्द गिर्द देख के मुझे 3 ऐसी चीजें बताओ that are soft, या that are red, या that are hot. Anything in your space around you to bring your child back to the present. जब बच्चे ने back to the present आके थोड़ा सा आपके साथ cooperate करना शुरू किया, then you can start what we talked about with the body scan. Where in your body do you feel the anxiety? It's a big feeling. It can be in many parts of the body. शायद हाथ कांप रहे हो और पेट में दर्द है, शायद सांस चढ़ रही है साथ में धड़कन तेज हो रही है. Okay, fine. How can we fix that? Put your hands on the table, sofa, chair, floor, whatever you're sitting on, and very firmly press them in. हर फिंगर, हर पाम को जोर से दबा के अपने टेबल, चेयर, सोफे, फर्श जिधर भी बैठे हो दबा के फील द होल टेक्सचर. पैरों के साथ भी ये करो. अच्छा, दिल की धड़कन तेज हो रही है, गहरी सी सांस लो and imagine that you're slowing down. Imagine that I'm hugging you very tight and you're calming down. Get your child to calm down and then talk about what the fear is. Anxiety के साथ हमेशा fear होता है. किस चीज़ से डर लग रहा है? Okay. Then work on how we can fix the dar. With children, it is very important to work with patience. उनको बहुत room दें, उनको बहुत patience दें, उनको बहुत प्यार दें, because हमारे यहाँ और across the world एक बहुत negative जो चीज़ होती है वो ये होती है कि if the child is acting out, lashing out, हम समझते नहीं क्यों और हम डांटना शुरू कर देते हैं. जब मुझे डर लग रहा है और मैं उस डर की वजह से चीखें मार रही हूँ या तोड़ रही हूँ या जो भी कर रही हूँ और मुझे कोई और शोर मचा रहा है, that's not gonna help me. I'm gonna shut down. मुझे ये बात समझ नहीं आएगी and I'll just keep getting worse. I want you to imagine कि एक आग है और आप उसमें एक और आग मिला रहे हो. It's just gonna grow.
इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू आर डूइंग इज आग है, आप उसके ऊपर एक फायर प्रूफ ब्लैंकेट डाल रहे हो, आप उससे ऑक्सीजन खत्म करके उस आग को पुट आउट कर रहे हो और इस सिचुएशन को काम कर रहे हो, उसमें और हाइपर होने से कुछ फायदा नहीं होगा. एंड अगेन नोबडी इज परफेक्ट. यूर अ पेरेंट और अ केयर गिवर, तब भी चढ़ जाती है, गुस्सा भी आता है, फ्रस्ट्रेशन भी होती है. इट्स ओके टू टेक डिस्टेंस. इट्स ओके टू टेल योर चाइल्ड, abhi I don't have it in me, give me 2 minutes, let me get myself some water, let me get you some water, let's calm down and then we'll try and fix this. Now, one thing that's important to understand is I'm a psychologist. This is quite literally what I do. Nobody is expecting you to be able to handle this 110%. Understand that help is available and you can always get help for yourself or for your children. There are specific child psychologists who treat exactly this, who treat all conditions that children have. और जब कोई ऐसी situation है which is not feeling manageable, there is no shame, there is no harm in getting help. This does not make you any less of an amazing parent. And in fact, understanding that your child needs help is part of being one of the most awesome parents there is. Understanding that I'm not expected to have this skill set. Let's be honest, आपके बच्चे की टांग टूट जाएगी तो आप फिर भी उसको खुद जोड़ने की कोशिश नहीं करोगे. It's the same process here. Getting help is very easy and it's something that you should feel more than welcome doing. इधर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि make sure that the person you go to is qualified. In Pakistan, you have to have a master's in clinical psychology or child psychology to be a child psychologist. That's a requirement. And you should have some supervised and unsupervised hours of practice. You can ask. जब आप किसी psychologist या psychiatrist के पास जाते हैं, you don't have to just blindly listen. बैठ के आप कह सकते हैं आपकी qualifications क्या है, आपकी experience क्या है, can you treat this? And if you can't treat this, can you refer me to somebody who can? This is part of our job description. This is what we do. So feel free to ask questions, and there is also always the option through mediums like this, या फिर to go see a psychologist, say मेरे बच्चे के साथ ये मसला है, what can I do? These are options you have, and the reason we exist is to help you. The reason that our job exists is to make life easier for you and to make parenting easier for you. कोई आलम फाजल नहीं है, किसी को ये knowledge पहले से नहीं है. We're all trying to figure it out. Our job is to help you figure it out a little bit better. I think that that's all I had to discuss. So thank you so much for tuning in. Thank you so much for listening to me speak. Please feel free to reach out if you have any questions. And I'd like to end by saying a huge thanks to Voila PR and the Scary Ammi team for the wonderful invite. I've been a part of the team and it's been a truly wonderful experience. It's been an absolute delight. I am grateful for the opportunity and I'm very happy that I got to engage with such an amazing community. Thank you. Bye.